Good morning, friends. So, welcome to the Prelims booster session. So, let us see the first topic, which is social media intermediaries. So, हमने ये कल डिस्कस किया था ना इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि आईटी टूल्स जो न्यू आए हैं उसमें ये इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं। जो हमारे जैसे फेसबुक का एग्जांपल है हम, तो आप और मैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक जो मैसेंजर की सर्विस हमको प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है वो फेसबुक है। असल में कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में हो रहा है, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी बिचौलिया है एक तरह से। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ बुरा बोलता हूँ या आप मुझे कुछ बुरा बोलते हो, कोई हेट स्पीच है, कुछ ऑफेंसिव बात हुई है, कोई क्रिमिनल केस है, तो उसमें फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। तो ये इंटरमीडियरी की जो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? सेक्शन 79 आईटी एक्ट का जो है वो कहता है कि जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है? नो। ये प्रोटेक्शन जो है ये तब लिफ्ट अप हो सकती है जब जो इंटरमीडियरी है वो बीच में अगर जो है वो दखल अंदाजी शुरू कर दे। आप समझ लो कि ये वाले केसेस देखो कि अगर जो है जो मैसेज भेजा गया है मेरी तरफ से कुछ ऑफेंसिव, उसको समझ लो अ, मैंने नहीं भेजा, कुछ समझ लो उसी इंटरमीडियरी ने, फेसबुक ने ही कुछ ऑफेंसिव मैसेज भेज दिया है, या फिर जो मैसेज ऑफेंसिव भेजा गया है उसको मॉडिफाई नहीं किया, जबकि वो फेसबुक चाहता, उसको पता लग गया था कि ये कुछ बहुत ही ऑफेंसिव मैसेज है और इससे दंगे भड़क सकते हैं या कुछ हो सकता है, फेसबुक को पता भी लग गया था, फिर भी उसने उसको मॉडिफाई नहीं किया, तो ये प्रोटेक्शन जो है फेसबुक को नहीं मिलेगी। तब गवर्नमेंट उसको उसके कान पकड़ेगी कि तुम्हें जब पता लग रहा था तब तुमने कुछ एक्ट क्यों नहीं किया। तो ये कुछ केसेस में जो है वो प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलती है। तो ये सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट ये उनको इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्शन देता है कि हाँ, वैसे अगर आप कोई लोग जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ एक मैसेंजर हो। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे मैं किसी के साथ चैटिंग कर रहा हूँ और मैं हम दोनों के बीच में कुछ गलत बात हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कुछ भी ऐसी बात हो जाती है या मैं कुछ झूठ उसको फैला देता हूँ, तो व्हाट्सएप की गलती थोड़ी है उसमें। लेकिन व्हाट्सएप को अगर पता भी लग गया है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा और मेरे को वो मैसेज करने दे रहा है, तब उसकी गलती आ जाती है इंटरमीडियरी की, कि वो ऐसी चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने में कोई भी वो है जो है वो एक्शन नहीं ले रहा है, तब उसकी गलती जो है वो एस्टैब्लिश हो सकती है। ठीक है, अब यही सेक्शन जो 79 ऑफ द एक्ट है यही क्वेश्चन में है, बिकॉज जो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इनको कहा गया है कि अगर आपको इसके अंदर की प्रोटेक्शंस चाहिए सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट की, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा इंडिया में। जैसे कि एक एग्जांपल है उसमें, जो कल हमने रूल्स बहुत सारे डिस्कस किए थे, उसमें से एक ये था ना, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अब ये किस लिए अपॉइंट करना पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर उस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, इसको आपको हटाना चाहिए, तो उस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को वो हटाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हटाता है तब ये जो प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं इंटरमीडियरी वाली वो हट जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि उसको कहने के बावजूद, समझ लो फेसबुक को या ट्विटर को कहने के बावजूद उसने एक्शन नहीं लिया, तब वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं रह गया, वो इसका मतलब वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इस ऑफेंसिव स्पीच में, इस हेटफुल कंटेंट में वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, फिर ये प्रोटेक्शंस उसको मिलनी बंद हो जाएंगी। अब ये कहती है ये रूल्स कहते हैं, जो न्यू रूल्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं किया हुआ, तब तो आपके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है आपको यहाँ पे इंडिया में आप जिसको हम बोल सकें, जिसको हम पकड़ सकें। फिर उस केस में क्या होगा कि आपके जितने जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनीज़ के, उनको भी हम जो है पर्सनली लाइबल जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि आपके जो जो समझ लो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, उनके जो असली एम्प्लॉयर हैं, जो फेसबुक यूएसए के जो मैनेजमेंट है, वो ही जो है वो कोई चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उनके जो है उनको अपॉइंट नहीं करके दे रही। तो इसका मतलब फेसबुक जो यूएस से है वो चाहता है कि जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स हैं आप इन्हीं को ही पकड़ लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो है ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं कोई अपॉइंट करती है इंटरमीडियरी कंपनी या सोशल मीडिया कंपनी, तो जो यहाँ के लोकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी तक भी लग सकती है। ठीक है, अब जो है
ग्लोबल नॉर्म्स क्या हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में? तो यूएस में भी यही नॉर्म्स है। सेक्शन 230 जो है 1996 का कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, हमने एक बार इसको डिस्कस भी किया है प्रीलिम्स बूस्टर में। तो ये सेक्शन 230 जो है वो भी यही इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी देता है और उनको कहता है कि आपको हम सेफ हार्बर, अब ये सेफ हार्बर प्रोविजंस क्या होते हैं कि जो इस फेसबुक पे या ट्विटर पे जो प्लेटफॉर्म जो जो भी कंटेंट शेयर किया जा रहा है उसमें इन प्लेटफॉर्म्स की कोई गलती नहीं है। अब इस पे भी कुछ कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में जो है उनकी गलती नहीं मानी जाएगी और किस कंडीशन में उनकी गलती मानी जाएगी। सेम यही जो है वो अब इंडिया भी यही कर रहा है आईटी एक्ट में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाना हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा एक तरह से हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। यूएस में ऐसा नहीं किया गया बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, now let us see this topic in English. So the topic is social media intermediaries. So we have discussed these IT rules yesterday, and we discussed about this terminology intermediaries, how a social media company is an intermediary. So in legal terms, Section 79 of this IT Act provides the legal definition of an intermediary, and it says that otherwise, this social media companies will be these social media companies will be regarded as intermediaries, except in certain cases. And what are these exceptions? If they initiate the transmission of that message, which is basically a hateful message, if they are the originators of that message or they have encouraged that message, then they will be held liable because they this protection will not be available to them. Okay, so otherwise what happens, if I have posted something hateful, then it is my responsibility, I have done something wrong. Okay, then it's not the fault of an intermediary like Facebook or Twitter, it's my fault. But what if I have posted some message that is grossly communal or it is a hate speech, and even after knowing that it is a hate speech, Facebook or Twitter uh, does not take any action, then it would mean that they are also a part of that message and they endorse it, and in that case this intermediary protection will not be available to them. Okay, so there are certain other exceptions also, such as they do not if they do not modify any information. Okay, so if I have made some bad remark against a community or a certain section of people, and the law enforcement agencies of our country of India are asking Facebook or Twitter that you should remove this message or this post because it is very offensive and it is a hateful speech, and if they do not remove that content, then they will be held responsible because it would mean that they are endorsing that speech. Okay, so otherwise section 79 of the IT Act is providing protections to these intermediaries, but there are certain rules. Now government is saying that we will give you such protections, but you will have to comply with some rules. The rules we have discussed those rules yesterday itself. Now you would be remembering that there was a clause in which these significant social media intermediaries, now significant social media intermediaries were those who have basically more than 5 million subscribers or users. So these companies, if they do not appoint a chief compliance officer in India, who basically who has to be a resident of India. If they do not appoint that, then they will be then this intermediary protections will not be available to these social media companies, and it would be assumed that the company does not care about its employees in India, and in the absence of this chief compliance officer, any case against these intermediaries will be taken to their employees. So now let me explain you with an example. Let us assume that I have posted something very objectionable over the over internet, let's say Twitter. Okay, so I've made a very objectionable post on Twitter, so the law enforcement agencies are asking Twitter to remove that, but Twitter is not removing that, and they also they do not have a chief compliance officer also. So whom would the government catch,
or whom would the government ask to remove that content, or whom would the government or the law enforcement agencies uh, I mean uh, investigate in this matter. Then in this case, in the absence of chief compliance officer, the law enforcement agencies would be forced to take action against the employees of Twitter who are resident in India. Okay, so otherwise, if there was a chief compliance officer, these employees would have been protected. The law enforcement agencies would have asked only this CCO, because he or she was will have to be uh, com, uh, an officer who would comply with these conditions. But if he is not here, or he or she is not there, then the law enforcement agencies would be forced to take the actions, or would be forced to take actions against the executives of these companies who are resident of India. Okay, so to prevent their own executives, these companies have to appoint a chief compliance officer in India. Okay, so do we have such social media intermediaries rules around the globe? Yes, in US also there is an act which goes by the name Communications Decency Act 1996. Under Section 230 of this act, safe harbor provisions for these platforms are uh, applied in that country. And when basically during President Trump, this provision was in news. We already discussed it in prelims booster also. So the same provision is being is in news in India these days, and we are having some controversies regarding that. Facebook says that it will comply with these conditions. Twitter is not very comfortable with these provisions. WhatsApp has taken the government to the Delhi High Court. So there is something fishy, because these companies are complying all these conditions in the United States, but they are not ready to comply it in India. Okay, so we'll see what happens in the next few days. Anyways, let's see the next topic, which is study on marriage and family life in India. So एक स्टडी की गई है जिसके अंदर जो है बताया गया है कि जो यूथ है वो अब जो है जो मैरिज है उसको थोड़ा डिले कर रहा है अपनी लाइफ में, और इवन कुछ लोग जो हैं मतलब सिंगल रहने की भी जो एक तरह से जो परसेंटेज ऑफ यूथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो ये बहुत सारे कुछ आंकड़े हैं, ये आपको प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। ये आपको अपने मेंस के एक आंसर राइटिंग में थोड़ा-सा हेल्प कर देंगे, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया है ये जो न्यूज़ में था। तो इसको आप वैसे ही पढ़ लेना, आपको इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही पढ़ लेना, आपके दिमाग में रहेगा। बस ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, आपको ये परसेंटेज जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so now let us see this topic in India, in English. Study on marriage and family life in India. So this topic has been in news because a study has been conducted, and the study is saying that the youth of India is now marrying late in life, and there are some statistics regarding this study, uh, and these studies are important for your mains examination. It is not important for your prelims examination. So these you don't need to remember the percentages, you just have to remember the trend. What are the trends among with respect to marriage in India amongst our youth. So you can read this yourself. I've just shared it so that you can read it and you can use it in your mains answer. Okay, so now let us see the next topic, which is Mekedatu reservoir. So तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि कर्नाटका जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है कावेरी रिवर पे, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे, उसको हम नहीं बनने देंगे। तो ये एक डिस्प्यूट बहुत पहले से चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है वो मेकेदातु में जो है वो एक रिजर्वायर या फिर डैम बनाना चाहती है, जो कि नगरम डिस्ट्रिक्ट में है, और कावेरी रिवर पे डैम बनाने की बात कर रहे हैं, कब तमिलनाडु के बॉर्डर पर है बिल्कुल। तो
अब वो बनाना किस लिए चाहते हैं, ताकि जो है बेंगलुरु में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दी जा सके। लेकिन तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आज आप जो है ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल जो है उसमें जितना हमको शेयर मिला था वो कम हो जाएगा, बिकॉज इससे पानी डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन जो है कर्नाटका कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी डाइवर्ट उतना नहीं होगा, सिर्फ हम जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है जो शेयर जितना मिला है तमिलनाडु को उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो शेयर कितना मिला है ये सब भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी एक 2018 की, जिसमें कावेरी वाटर जो है उसकी शेयरिंग के ऊपर जजमेंट दी गई थी। ठीक है, कावेरी को एक नेशनल एसेट बनाया गया था, और जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है उसमें जो है तमिलनाडु का में जो ग्राउंड वाटर है 20 टीएमसी उसको अकाउंट नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसीलिए ये जजमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि आपने ग्राउंड वाटर जो है वो तमिलनाडु में 20 टीएमसी है, तो उसको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जब आप जो है कावेरी वाटर की जो शेयरिंग का आप जो है वो आंकड़ा दे रहे हो। ठीक है, तो कर्नाटका को जो है वो थोड़ा ज़्यादा फिर इसलिए शेयर दिया गया क्योंकि टीएमसी 20 टीएमसी वाटर तमिलनाडु में ऑलरेडी अवेलेबल था। तो तमिलनाडु की थोड़ी सी एलोकेशन को इसलिए कम किया गया। ठीक है, तो तमिलनाडु को 14.75 की एलोकेशन कम की गई, और जो है उसके बेसिस पे जो है कर्नाटका की थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो एलोकेशन की गई, और कर्नाटका को कहा कि आपको सिर्फ 177.25 टीएमसी ऑफ कावेरी वाटर जो है वो तमिलनाडु के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, जल शक्ति मिनिस्ट्री उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन निकाली, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया, जिसमें चेयरमैन हैं, 8 मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी है, और ये जो है जितना शेयर कावेरी का कर्नाटका और तमिलनाडु को मिलना है, फिर पौंडीचेरी पुडुचेरी बेसिकली केरला को मिलना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम इस अथॉरिटी को दिया गया है। अब कावेरी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा साउथ इंडिया में। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका में, वहाँ पे तलाकावेरी हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी, वहाँ पर ये निकलती है कावेरी रिवर, और ये कहाँ पर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Mekedatu Reservoir. So Tamil Nadu government has said that it will not allow Karnataka's Mekedatu Reservoir project in on Kaveri River. Okay, so let us see what is the issue between these two states. So actually, Karnataka government is planning, rather was planning to construct a reservoir or a dam on near Mekedatu, which is in Ramanagaram district near Tamil Nadu, and Tamil Nadu is resisting it because it says that this will violate the share the share of Kaveri river that has been allocated to Tamil Nadu. Okay, but Karnataka is saying that it will not violate any share, it will not violate or reduce any share of Kaveri river, because they just want to supply drinking water to Bengaluru from this project, and it will not, Karnataka will not be using it for irrigation purposes. Okay, but Tamil Nadu has moved to Supreme Court, saying that it violates the Supreme Court judgment of 2018 and Kaveri River Water Tribunal judgment award. So let us see what was the judgment of Supreme Court in 2018. So it is related to the sharing of Kaveri water. Kaveri was declared a national asset, and it was to be distributed between Kerala, Karnataka, Puducherry, and Tamil Nadu. So it emanates from Karnataka. Kaveri River originates from Karnataka, and principle of equality was followed amongst all these riparian states. Okay, so later it was found why the conflict basically why the conflict reached to Supreme Court after Kaveri River Water Tribunal's award, because it was found that this water tribunal has uh, avoided, or it has not factored in the Tamil Nadu's basically groundwater, 20 TMC of groundwater that was available with Tamil Nadu. This CEWDT did not factor in this
share of Tamil Nadu's water. So Karnataka was awarded uh, a little more share of Kaveri water than uh, this tribunal awarded it earlier. Okay, so the water that was to be given to Tamil Nadu was reduced because of this 20 TMC of groundwater which is available with Tamil Nadu. So after that, this issue started again after when Karnataka said that they want to construct a reservoir on Mekedatu, on Kaveri River near Mekedatu, but then Tamil Nadu government said that it violates this Supreme Court judgment, which says that 177.25 MC of Kaveri water has to be shared by Karnataka to Tamil Nadu, but Karnataka is saying that it is not violating this judgment, and the case is in court at this moment. Okay, so to implement this judgment of Supreme Court, the central government issued a gazette notification, and it notified a Kaveri Water Management Authority with a chairman, 8 members, and a secretary, which will implement the decisions or the award or the judgment pronounced by Supreme Court in 2018, and it will distribute the river water according to this judgment. Okay, so now let us see what something about Kaveri River. It is the longest river of peninsular India. It is the third largest river after Godavari and Krishna in South India. It originates from Talakeveri in the hills of Brahmagiri in Kurg district of Karnataka. It drains its water into the Bay of Bengal. Now let us see the topic of Switzerland and EU ties. So Switzerland जो है उसने मना कर दिया है कि अब वो आगे जो है नेगोशिएट नहीं करना चाहता यूरोपियन यूनियन से, एक एक तरह से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कुछ कुछ वजह की वजह से, वो कुछ बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से वो आगे जो है वो नेगोशिएट नहीं करना चाहता. अब हम ये वजह भी आगे देखते हैं. तो EU स्विट्ज़रलैंड के टाइज देख लेते हैं. सबसे पहले तो आप जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो EU का पार्ट नहीं है. उसके 120 बायलैटरल डील्स हैं EU के साथ, और उसी के बेसिस पर वो आपस में डील करते हैं. जबकि EU के बिल्कुल अंदर है वो, यूरोप के बिल्कुल एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, लेकिन फिर भी उसने कभी भी EU को ज्वाइन नहीं किया. स्विट्ज़रलैंड जो है उसमें 14 लाख जो हैं EU के सिटीजन्स रहते हैं, और टोटल पॉपुलेशन जबकि स्विट्ज़रलैंड की 85 लाख है, उसमें से 14 लाख हैं वो EU के ही सिटीजन्स हैं. स्विट्ज़रलैंड जो है वो EU का जो है EU बेसिकली स्विट्ज़रलैंड का बिगेस्ट ट्रेडिंग डेस्टिनेशन है, और उनके बीच के जो एग्रीमेंट्स हैं EU और स्विट्ज़रलैंड के बीच में वो 120 सेपरेट ट्रीटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. स्विट्ज़रलैंड जो है उसके पास EU की सिंगल मार्केट का एक्सेस है और ओपन बॉर्डर्स हैं. आप शेंगन वीज़ा लेके जाओगे तो आप स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हो, उनके ओपन बॉर्डर्स हैं EU कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, फिर अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी थी. EU जो है वो बहुत पहले से पुश कर रहा था कि आप जो ये 120 हमारी सेपरेट ट्रीटीज़ हैं उसकी बजाय हम एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिससे कि हम सारी जितनी हमारी जो इश्यूज़ हैं, जो ये लेबर मार्केट, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, रिसर्च, ये सारी जो हैं हम एक ही एग्रीमेंट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन अब वो स्विस गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने डोमेस्टिक जो है हमारी पॉलिटिक्स है हम उसको देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों से बात करेंगे कि क्या हमें ये एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो अब जो है क्योंकि EU डिमांड कर रहा था कि स्विट्ज़रलैंड की लेबर मार्केट का एक्सेस जो है वो सारे EU के सिटीजन्स को मिलना चाहिए, तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसने ये एक्सेस देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो एक्सेस देंगे तो उनको सोशल सिक्योरिटी राइट्स भी देने पड़ेंगे. जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देते हैं वो अभी सिर्फ अपने स्विट्ज़रलैंड के सिटीजन्स को देते हैं, तो वो उनको EU के सिटीजन्स को भी देने पड़ेंगे. तो इसलिए जो है वहाँ की पॉलिटिक्स जो है स्विट्ज़रलैंड के लोग जो है वो नहीं मानेंगे इस बात के लिए, तो स्विट्ज़रलैंड ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहाँ की जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को कह सकते हैं कि आप इसको वोट पे रखो, इस पे रेफरेंडम करो, तभी इस डिसीजन को आगे लेके जाया जा सकता है. तो गवर्नमेंट को ये डर था कि वहाँ पे अगर रेफरेंडम हुआ इस हमारे डिसीजन के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो इसके खिलाफ वोट करेंगे और हमारी सरकार की जो है वो एक तरह से अगेंस्ट डिसीजन चला जाएगा. ठीक है,
Now let us see this topic in English. So Switzerland and EU ties. So first of all, you should know that Switzerland is not a part of EU. Switzerland is a part of Europe, but it is not a part of European Union. Okay, so uh, Switzerland and EU ties are basically a patchwork of more than 120 bilateral deals. But EU was pushing Switzerland that instead of these 120 bilateral deals, we should sign an institutional framework agreement, and uh, basically we'll combine all these 120 treaties into one treaty, a broad treaty, so that we can have a single treaty under which all these labor market, healthcare, education, and research issues can be accommodated instead of 120 separate deals. Okay, so now let us see some facts about EU and Switzerland ties. So Switzerland is the fourth largest trading partner of EU, but EU is the biggest trading partner of Switzerland. Okay, so 14 lakh EU citizens currently live in Switzerland, which has a population of 85 lakh. Okay, so Switzerland currently has access to EU's single market, and it also maintains open borders with European Union. But as I've told you earlier, EU has had been pushing that we should, instead of these 120 bilateral deals, we should sign an institutional framework agreement to deal with all these issues for which we currently have 120 separate treaties. But Switzerland government we and entered these negotiations in 2014, but because of EU's bureaucratic arrangement and slow process, it has been in negotiation since then. And in 2018, Swiss government has said that we need time to discuss this arrangement with our people and our domestic politicians about its implementation. Now Switzerland has said that we don't want to deal with you in a separate manner, or we don't want this institutional framework agreement. We are okay with these 120 bilateral deals which are currently ruling our ties between our nations, that is EU and Switzerland. So why these talks have failed? Because EU was demanding full access for its citizens to Switzerland's labor market. So Switzerland was fearing that if they give access of their domestic labor market to EU citizens, then they would have to give social security rights to them also. Okay, so it would be very expensive that they would have to give social security rights to EU citizens. And most importantly, Switzerland migration has always been a very contentious issue in Switzerland. The people of Switzerland are not very comfortable with the EU citizens who are currently working in their country. Okay, and you should know that Switzerland has a form of direct democracy where the citizens can ask their government to put any decision for a referendum, and they can vote upon it, and if they vote negative, then the government of Switzerland would not be able to carry it forward. Then that's why Switzerland government has been fearing that if the people asked for a referendum on this, in this case, then they would lose it out. So the Switzerland government has denied that they don't want to negotiate about this and negotiate on this institutional framework agreement with EU anymore. Okay, so now let us see the next topic, which is Interpol. So जो fugitive हमारा एक डायमंड शेयर है, जो मेहुल चौकसी, जो कि भाग गया था, एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ चल रही थी, एक दो दिन पहले, कि वो गायब हो गया है एंटीगुआ और बारबुडा से, और अभी वो है रिसेंटली डोमिनिका में पकड़ा गया है, और इंटरपोल का येलो नोटिस इशू हो गया था जब वो वहाँ से गायब हो गया था। तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरपोल के नोटिस जो है वो मैंने यहाँ पर आपको डाल दिए हैं। उसमें से न्यूज़ में हमारे येलो नोटिस है, तो सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। येलो नोटिस इंटरपोल तब डालता है जब कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है। तो इस केस में मेहुल चौकसी जो है वो एंटीगुआ और बारबुडा से मिसिंग हो गया था, तो इसलिए इंटरपोल ने येलो नोटिस जो है वो इशू किया था उसके लिए।
ठीक है। सो अब देखते हैं इंटरपोल क्या है। इंटरपोल जो है, सबसे पहले तो याद रखो कि यूएन का पार्ट नहीं है, यूएन की कोई पुलिस नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में आपको डालेंगे ही डालेंगे कि यूएन का पार्ट है एंड ऑल दैट। तो आप याद रखो कि इंटरपोल जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है, वो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 184 मेंबर स्टेट्स हैं। 1923 में इसको बनाया गया था। फ्रांस में लियोन है, वहाँ पर इसकी जो है हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। और ये उन कंट्रीज के बीच में भी जो है पुलिस कॉपरेशन जो है वो डील करवाता है जिनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। जैसे समझ लो कि इसराइल और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई क्रिमिनल कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उस केस में जो है इंटरपोल जो है वो काम करेगा। ठीक है। अब इंटरपोल जो है वो इन द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसको इंश्योर करने के लिए काम करता है। और ये कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर के जो है कंटेक्स्ट में कभी भी कोई इंटरवेंशन नहीं करता है किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ डील करता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि कभी ये पॉलिटिकल कोई इशू हो गया किसी कंट्री में तो कोई इंटरपोल उसमें कोई जो है वो डील नहीं कर सकता। मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर में भी कोई डील नहीं कर सकता इसमें। अब हर कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री है इसकी, उसको अपनी कंट्री में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाना पड़ता है और इंटरपोल का ही होता है वो बेसिकली। इससे क्या होगा कि अब समझ लो कि जैसे ये था, अब इसी का एग्जांपल ले लो, मेहुल चौकसी। अब इंडिया के अंदर जो इंटरपोल का एनसीबी होगा उसको इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी, फिर इंडियन जो इंडिया का इंटरपोल का जो एनसीबी होगा इंडिया में, वो जो है समझ लो एंटीगुआ या बारबुडा में जो एनसीबी होगा वहाँ पर बात करेगा। और ये 24/7 एक नेटवर्क है उनका, सिक्योर पुलिस, ग्लोबल पुलिस ने कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके थ्रू बात करते हैं, उसके थ्रू डील करते हैं और दो कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि वो ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके केसेस को जो है वो डील कर सके। Now let us see this topic in English. So the fugitive dementia, Mehul Choksi, who had recently fled from Antigua and Barbuda. Uh, he has been captured in Dominica because he was trying to flee this Antigua and Barbuda, and Interpol had already issued a yellow notice against him. I have already discussed basically all types of notices that Interpol issues, but because yellow notice has been in news for us, so we just have to see this notice. If you are interested, you can read all these notices, but it would not be very important for your exam. Just this yellow notice you should remember. Okay, so yellow notice is issued to locate missing persons. So as this Mehul Choksi went missing from his country because he's a citizen of Antigua and Barbuda, Interpol issued the yellow notice. Okay, so now what is important for us, it is to see that what is Interpol. So Interpol is the world's largest international police organization. It is not a part of United Nations. You just have to remember that. Okay, so it was established in 1923. Its headquarters is in Lyon, France. It facilitates international police cooperation even where there is no diplomatic relations between two countries. So as I've taken an example of Israel and Pakistan, they don't have any diplomatic relations with each other. But in case there is an issue of crime, across border crime that happens between Israel and Pakistan, Interpol would come into the picture, and uh, the Interpol's mandate is to ensure that police cooperation is facilitated in the spirit of Universal Declaration of Human Rights. So its charter basically prohibits that Interpol cannot intervene in cases of political, military, religious, or racial cases, basically. Okay, so each member country has to host Interpol's National Central Bureau, and now let us see this example. In case of Mehul Choksi, the NCB, the Interpol's NCB in Antigua and Barbuda would have issued this yellow notice against Mehul Choksi, and uh, the country of Dominica's NCB, Interpol's NCB, would have received that notice, and it would have started
inquiring about Mehul Choksi, because this yellow notice is about locating missing persons. So the Interpol communicates with each other through these NCBs. In India, Delhi would be hosting it, and most probably our CBI would be hosting this, and Interpol's NCB. Okay, so these were our topics for today. We are also sharing weekly compilation of current affairs in our Telegram group, so please download that. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.